अब उनका कम से कम हो जाए, है ना? ठीक। तो चलो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। जय जिनेन्द्र सभी को। आज 22 अक्टूबर है और शायद धनतेरस है ना आज इंडिया में, कि या तो धनतेरस है और दिवाली आने वाली है। तो आज हम गंधर मूल्यांकन करेंगे और मैं 2 मिनट दिवाली के बारे में बोल देती हूँ। आप लोगों को मोस्टली सबको शायद पता होगा, पर जिनको नहीं है, हम धनतेरस क्यों मनाते हैं? हेमल, डिड यू नो दैट व्हाई वी डू धनतेरस? I thought we don't do it. No, so I'll tell you why we do it. I know. बताइए मैम। Actually, धन्यतेरस. It may be in other paramparas ki dhan is something to do with wealth, but for Jains it is Dhanteras. So this was the last day Mahavir Bhagwan gave his sermon, English में बोलो तो, या उनका जो भी व्याख्यान हुआ था, दिव्य ध्वनि का लास्ट डे था, है ना? तो वो धन्य हो गई वो रात, जिस दिन भगवान की दिव्य ध्वनि, लास्ट दिव्य ध्वनि गिरी थी। ठीक है। फिर 14 हम इसलिए मनाते हैं, I mean, actually देखा जाए तो 14 is a sad day for us, क्योंकि फिर उस दिन उनकी वाणी नहीं खिरी। करेक्ट। और हाँ, और फिर दिवाली के dawn, very early in the morning, उनका निर्वाण हुआ। तो क्यों, I mean, so now normally if you think about it, and I mean लौकिक दृष्टि से देखो तो somebody passed away, right? So should it be a happy occasion or should it be a sad occasion? Yeah, sad occasion. I'm looking for replies. So Hemal, what do you think? Should it be a sad occasion or happy occasion? You know, it depends. So it's both. देखो, yeah, it's both. जैसे हम क्या बोलते हैं, नए जैनिज्म में हम नए सीखते हैं, अपेक्षाएं सीखते हैं, और you know, so किस अपेक्षा से देखना? इस अपेक्षा से कि उनका शरीर छूट गया, तो जो आसपास के मोही जीव थे उनके लिए तो किसी का विरह हो गया, और खास करके भगवान का विरह, जिनकी दिव्य ध्वनि रोज खिल रही थी और हम धर्म का लाभ मिल रहा था, और वो बंद हो गया। तो it's a big void for the people at that time, right? So उनके लिए तो बहुत दुखद चीज थी। पर अब हम अगर भगवान की दृष्टि से देखें, या हम अपनी भी दृष्टि से देखें, कि कोई जीव मोक्ष चला गया, उन्होंने इतना कल्याण किया सब जन जन का, उनकी दिव्य ध्वनि से इतना कल्याण हुआ, और अब वो जीव मोक्ष पहुंच गया। He is happily ever after. That is the true happily ever after. अब उनको न जन्म मरण से का दुख भोगना पड़ेगा, ना उनको कभी इस दुनिया में आके ये सब परपंच देखने पड़ेंगे, ना कुछ करना पड़ेगा। तो what a big deal it is कि वो forever happy हो गए। तो हमारे लिए ये बहुत हर्ष की बात है कि हमारे भगवान निर्वाण पहुंच गए और उनको अब इस संसार के दुखों से टोटल मुक्ति मिल गई। So it's a mixed feeling. And you know, कल ही मैं अर्चना दीदी से बात कर रही थी कि भाई उस टाइम के लोग जो थे उनको तो दुख हुआ, but now we are not when he was there, right? So हमारे लिए तो it's more happy than sad, क्योंकि happy अब वो निर्वाण का कारण, प्लस हमें तो उनकी दिव्य ध्वनि की किताबें पढ़ने को मिल ही रही हैं, and we are not physically present, तो कि हमको उनके देह विलय का मतलब कोई बहुत शोक समझ में आए या पता चले। So that's the true way we should take it. Now, as far as परंपरा, मैं सब परंपराओं के बारे में नहीं जानती, how people celebrate, you know, Diwali. पर one of the things that I have grown up with, or no, I wouldn't even say grown up with, actually, my family didn't
do it the right way. But my in-laws family, they do malas. कि you remember कि 14 की रात को हम माला करते हैं कि महावीर स्वामी केवल ज्ञानाय नमः. फिर दिवाली की मॉर्निंग को हम माला करते हैं महावीर स्वामी पारगताय नमः, गौतम स्वामी केवल ज्ञानाय नमः, क्योंकि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ उसी समय जब मतलब soon after महावीर स्वामी का निर्वाण. तो वो भी हर्ष की बात है कि एक और जीव को केवल ज्ञान हुआ था, है ना. So we remember those things. We can read महावीर अष्टक जो हमारे किताब में हमने पढ़ा है already. So I would like कि since हम वो पढ़ चुके हैं कि हमारी क्लास एटलीस्ट दिवाली के दिन महावीर अष्टक पढ़े, है ना, क्योंकि उस दिन हम उन भगवान महावीर के गुणों को याद करें और how he has been helpful to us, है ना. So happy Diwali to all of you. Happy Diwali. Happy Diwali. हाँ, so yeah, यहाँ पर तो कभी कभी इतना बिजी हो जाता है कि कल शाम से next 10 days we have to go somewhere every day. Oh. So it's like but ठीक है. तो कल मैंने भी जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनके बीच में रखा है. And I try to, because see most majority people, even Jains, को भी जो हिंदू वाली दिवाली ज्यादा पता होती है, because I mean it's nobody's fault. You are living in a society where majorities are Hindus और राम भगवान की story सबको सुनने में आती है, and that is the reason you get to hear all the time. So that's so I try to make it a point to share with others that why Jains celebrate Diwali. So यहाँ पर हम जो एक मंदिर की पाठशाला चलाते हैं तो it's not all Jains. So उसमें भी I make sure that people understand कि Jains का क्या reason है और why. तो anyway, so आप लोग भी जो जहाँ रहता है, if you are not in a all Jain community, take it upon yourself कि आप inform करो अपने friends को और सबको. Because हमारी जैसे information, we got bombarded with whatever the majority was because nobody informed us about our own religion. Now it's our duty to inform others as well as our kids the true things, right? But Prabhaji, to that point, I don't think the majority wants to hear about the minority. Most people's mindset is not there, except our very You're right, and that's okay. अगर तुम्हें लगता है कोई receptive नहीं है, then छोड़ दो. You don't need to burden them. आगे फैमिली को तो बता ही सकते हैं, like ना? I definitely do it with my close friends. Yeah, close friends. I also present in schools and high schools, so I make sure people understand why Jains celebrate Diwali, and it is because of that. It is known. जब ओबामा ने दिवाली greetings भेजी, तो उसने बोला कि for Jains महावीर निर्वाण. अगर हम Jains ये नहीं करेंगे, तो किसी को नहीं पता चलेगा. So how did it reach the White House? Because us Jains communicated. नहीं तो बस हैप्पी दिवाली राम जी घर आ गए. अरे यार घर आ गए. I mean, अब किसी को अगर रियली में कॉमन सेंस हो, मेरा बेटा घर आए मुझे भी उतनी खुशी होती है, तो व्हाट इज द बिग डील? तो but then you cannot say that to your friend to whom it's a big deal, right? But gently, if you make them think कि सोचो कि राम भगवान और हम में क्या फर्क है. उनको इतने दुख हुए, वाइफ से डिवोर्स हो गया, वाइफ को छोड़ना पड़, अबे क्या बिग डील है यार, रोज यहाँ हालात ऐसी चीजें हो रही हैं, व्हाट्स द बिग डील? फिर बट वही राम भगवान मोक्ष भी गए, एंड दैट इज द बिग डील. अदरवाइज और भगवान, इनफैक्ट रिसेंटली मैंने किसी से सुना था कि हिंदुओं में भी राम जी को भगवान कभी पहले बोला ही नहीं जाता. ये तो फिर बाद में वो अपभ्रंश हो गया, हर किसी को भगवान बोलना शुरू हो गया, तो कृष्ण जी ये वो. पर अदरवाइज राम को हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह बताया जाता था, एंड दैट इज फेयर कि उनकी लाइफ ड्यूटीफुल थी. सो देन फाइन, यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम देम. बट फॉर अस, what term we use or not is irrelevant, but for us in our minds, we know the clear definition of our Bhagwan.
and only the person that fits that mold, Vitrakta, Sarvagyata, and of course Hitopshit or not doesn't matter as much as Vitrakta and Sarvagyata, तो वो ही भगवान हो सकते हैं. तो राम भी क्योंकि मोक्ष गए, निर्वाण गए, तो है हमारे लिए वो भी भगवान है. और अभी रिसेंटली हाँ ऐसे ही कोई गैदरिंग में, इट वाज ऑल हिंदूज और मैं ही जैन थी, तो उन्होंने कहा आप कि राम को नहीं पूजते. मैंने कहा नहीं, हम बिल्कुल राम को पूजते हैं, पर हम धनुर्धारी राम को नहीं पूजते, क्योंकि हमारे भगवान को तो डर लगता ही नहीं है, तो उनको तो तलवार धनुर कैरी करने की जरूरत ही नहीं है. समझे ना, हम भी राम को पूज सकते हैं, पर कैसे राम को पूजेंगे? फिर जो दिगंबर मूर्ति दिखेगी उसको हम पूजेंगे. यस यस, क्योंकि वो मोक्ष गए जब हम भगवान. दिगंबर मूर्ति को पूजते हैं और पंच परमेष्टि बोलते हैं, तो हम देखते नहीं कि हिंदू है कि क्या है. राइट, वो बोलते हैं हिंदूज फील, क्योंकि देखो हमारी कहानियों में आता है, विच इज ट्रू, कि सारे हमारे भगवान क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, राइट, सारे राजा थे. तो अकॉर्डिंग टू देम, उनको आई मीन दे थिंक कि आपके तो सारे भगवान हिंदू थे, वो तो बाद में जैन बन गए. So it's like such a mixed up concept, and I don't blame them. I mean, they are right in a way. और हम भी सोचें that is true. अब मुझे तो honestly खुद को इतनी नहीं है information, क्षत्रिय कुल मतलब does it mean it was a Hindu family? It's hard. I have to find that out. तभी जब ये थे ना कि क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ये है, तभी ऐसा वर्ड हिंदुइज्म नहीं था, because I researched it. The word Hinduism got coined much later in the 1500s or much after the 1000s, you know. No, there has to be some, I mean, if you're into history, please research, because I don't think Jainism differentiates Kshatriya this, that, right? Maybe they do. हमारे शास्त्रों में आता तो है कि क्षत्रिय कुल के थे. Actually क्या हुआ, जब भी ऋषभ देव ने दीक्षा ली और वो गए, तो भरत चक्रवर्ती and बाहुबली Bhagwan, they had a fight over the land, because Bharat wanted to become owner of all the land and Bahubali said, no, only part of it. And then they had that whole other thing, that side story that happened. Yeah. But at the end, he became Bharat Chakravarti, and then Bharat Chakravarti divided the groups of people according to their function. You know, some were Kshatriya, some were Banya, and some were doing the menial tasks. They were not called untouchables, but they were doing the menial tasks. There were people like that. And then Bharat Chakravarti, additional group of Brahmins. I think it was done in the during when Rishabh Dev was there. Rishabh Dev, So Rishabh Dev had the you're right. Kshatriyas, Vanyas, and menial tasks. There were groups already, and Bharat Chakravarti added the Brahmin task for the religious purposes. And even then, Rishabh Dev advised him, "Don't do this. This will cause problems." But that time, nobody was called Jain or Hindus. It is just much later, because of the reason of reference. Who are the people that you're meeting? You know, people are traveling in the world on feet or by animals travel in those days. So who are you meeting? Oh, I'm meeting people that live on the banks of river Indus. And all that's why I cannot talk to people unless I've read the history and I have the proper reference, because it's not fair. Otherwise, we are spreading false information. So right. So yeah, that's good to know. And I always sort of imagined in this way. I never read the history books, but I did imagine this way, that there was no Hindu Jain in the beginning, Rishabh Dev's time, and there wasn't. But the problem is that Hindu Shastras say something else. कि ऋषभ देव किसके पुत्र थे और कुछ. I intervene here during our Das Lakshan. I heard this lecture from Dr. Priyadarshini Jain early in the morning at 6. So she said, yes, there was no such term as Hindu, Muslim, but there were a lot of ascetics, and there was a mixture. I mean, just to divide them or to make a differentiation, term Jainism was coined. It was not Mahavir Bhagwan or Rishabh Dev Bhagwan who said that, you all are going to be Jains. So this is, she explained. They just said that Europeans referred to us as followers of Jain Bhagwan. And that's how the word Jain
we came to be called Jains actually. So the thing with that is it is No, not. oh yeah, एक और चीज मैंने सुनी थी, एक श्रमण परंपरा थी और एक ब्राह्मण परंपरा थी. Yes, ma'am. We were called Shramanas. Right, exactly. क्योंकि we were doing the parishram to reach moksha. I think that is the connotation Yes, there, yes, right? Exactly. yes, Yes, yes. 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 The thing with So that is the Hinduism got coined by those people that used to say these are the people that live along the Indus. Nobody says that the people who lived along the Indus, were they following Jin Bhagwan or Shiv Bhagwan? And in fact, they are saying that Hinduism itself, with all their Bhagwans and all, is is borrowed stories. It came when we got invaded by Aryans. India got invaded by Aryans, and the original Indians were pushed down further south, and the North Indians are a mixture of the Dravidians that stayed behind, mixed with the Aryan clan that came in. But they brought their ritualistic religion with Aryans them कहाँ से from आ गए? Russia. Oh, अच्छा So अच्छा. चलो, that's this is very interesting to know. anthropology. I read anthropology because it's of lot of interest to me. But this comes from Maybe you can write a brief 1 or 2 page, just the relevant information. At least I would like that because I can share it with my folks. But anyway, and if you have a reference, because I like to with talk with reference. reference, you cannot just Absolutely say with things reference, because otherwise it's just information. right. So great. Then Okay, किसी की चलो, कल्पना enough भी हो time सकती है. spent on Diwali now. We are going to do a short class जो बाद में join हुए हैं उनके लिए बता दूं मैं. Happy Diwali to all of you. हम लोग we just went over Jains क्यों celebrate करते हैं, और जो एक दो लोग बिंदु जी और लेट आए, अगर आपको नहीं पता हो तो हाथ खड़ा करो, तो I will just quickly repeat that part. So you all know now, right? Why we celebrate Teras, Chaudas and Diwali. Okay. So अब आज कौन कौन गंधर कर रहे हैं? You are doing well. Yeah, I'm going to do chapter 2. Parulji was going to do it, but she's unable to do it. So I said I can pick it up. It's not a problem. And then I No think problem. Tulika ji had said she would repeat hers again today. So I'm not sure if she's prepared, but she would be the other person. Nandini ji messaged me saying she can't do it today. She has to go to temple. So No worries. But Prabhaji, as we talked, I think we should always do chapter first and Gandhar at the end. Whoever is there, whoever's attending, they can do the Gandhar at the end. Would be the best way. But आज के लिए यही सही है. आज के लिए अभी आज हम छोटा कर लेते हैं. तो दिवाली के मौके पे है तो, और मंडे को तो रियल दिवाली है, तो फिर वैसे ही प्रॉब्लम होगी लोगों को, राइट? क्योंकि निशा जी कैन प्रॉब्ली मंडे को हम क्लास नहीं करते अभी प्रभाजी. करेंगे. Not for the next 1 So month. अब next Saturday we will 29th. try to do a longer class, right? Yeah, chapter 3 करेंगे next Saturday फिर. हाँ, ठीक है. We'll तो finish. अभी आप We'll take a new chapter and try to finish it next Saturday then. Yes. ठीक है? And I think only if we have time at the end should we do Gandhars, and people should be prepared for their Gandhar. I will just have a list. People just need to start. See, the thing is, I want to take you guys to the point where you feel comfortable कि आज हमने आधा चैप्टर पढ़ाया, उस आधे चैप्टर का ही कोई उसी दिन गंधर कर ले. Because then that will encourage everybody to write notes. तो फिर क्या, आपने write notes तो लिख ही लिए, और जितने notes लिखे उसी को उसी दिन बोल देना है, and that's it. Correct. So which will become much simpler, and either way is good. Even this works because then सबको दोबारा सुनने को मिल जाता है. But ठीक है. तो चलो, तो आप और तुलिका जी करेंगे. तुलिका जी, can you confirm almost आधा घंटा इसमें spend कर दिया है. कौन सा चैप्टर करना है मुझे? Remember, you were going to do the second part of Bhavna Battisi. You said I'm not happy. हाँ, मैंने ऑलरेडी किया, बट मैं बोल रही थी उस दिन इतना एकदम डिटेल में हो गया था क्योंकि मुझे नहीं आया था, तो मैम ने भी समझाया था. तो अभी मूव ऑन करके कोई और चैप्टर ले सकते हैं क्या? क्योंकि वो भावना बत्तीसी का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तो ऑलरेडी हो चुका है. एक बार महावीराष्टक पढ़ने के लिए बोल रहे थे ना मैम, आप सब लोग महावीराष्टक पढ़ लें क्या पहले? हाँ, वो भी कर सकते हैं. हिमल जी, should we mute and do it? Yeah. So ऐसा करते हैं, 8 है ना, and we are 10 people. तो एक जना कर लो, और फिर जो 2 जने बच जाएंगे वो कोई और चीज हम
क्या पढ़ सकते हैं? You can, Hemal, you can read शुद्धातम है मेरा नाम. Okay. And then one poor person can read शुद्धातम है मेरा नाम. तो निशा जी को आता होगा? याद नहीं है, नहीं नहीं है याद. ओके, किसी और को आता है? मैम मुझे पता है, आपको आता है शिखा को? मैं Okay, देख तो के शिखा पढ़ आप सकती हूँ, देख के पढ़ लेना. देख के इट्स मुझे फाइन. feel आप वो करना है। करोगे और हेमल नहीं, यू डू एक्चुअली द वन मुझे दैट इज. याद नहीं है, लर्न नहीं है मुझे. कोई नहीं, दैट्स फाइन. और हेमल यू डू द सम्यक दर्शन वाला पोयम. Yes, which is that? The Samyak Uh, Darshan one. I'll bring it 1 second, huh? हाँ, you bring while we are going to start. तो सबके पास में है महावीर अष्टक खुला हुआ है? हाँ जी मैम. Okay, Minnie says she doesn't have the book today. Okay. Neither do So, I. Okay, चलो. तो हाँ, we'll मैं start start with Shikha ji, then Tulika ji, Shikha ji आप दोनों कर लेना because now we need extra person since Do we have Minnie. this book online? Do we have this book online? We do. Hemal, do you have a way of quickly sending the Google Drive link on the chat? Yeah, so that it becomes easy and we can refer that. Or we can even, yeah, somebody, you can share it, Hemal, if you have it handy. That might be a good idea. मैम. sending it, Hemal ji, I got it. मैम म्यूट हो गई है. प्रभा जी म्यूट हो गई. Sorry, Ma'am, this you're is on wrong. mute. Wrong. Okay. So Hemal, you want to share it? Do you want me to share it? I have it, ma'am. I can share it. No. Okay. No, you may not have the sharing capacity. I don't know if she gave you permission. I think I have. I shared it in the chat link. Yeah, to you Purnima. share. Okay, Hemal is sharing it for everybody. Okay, chalo. इसको हम बोल दे. Yeah. On start करो. थोड़ा expand कर लो Hemal. Yeah. Good. Everybody can read it. Okay, actually the first one is easier. So who wants to go first? मैं पढ़ूं मैम, मैं स्टार्ट करूं? ठीक है. Yeah. आप थोड़ा राग से करिए तो. हाँ हाँ. You know, Hemal, it went on WhatsApp. Can you change it back to the Mahavir Ashtak, please? Because you're sharing your computer. It's. Hemal, you won't be able to do other things on your Hemal ji, you're laptop on because mute, you're I sharing. think. Yeah, okay, महावीर there we go. शुरू करो निशा जी. महावीर अष्टक स्तोत्र. यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्या वैजनिल सन्तो अन्तर्हितः जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. Okay, hopefully सबको थोड़ा राग का idea आ गया है. And when one person is reading, everybody also read it together on mute. Okay? चलो तुलिका जी आप next try करो. ताम्रयचक्षुः कमलयुगं स्पन्दरहितं जनान्क कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिरस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. Very good. एक दो mistakes थी तो देखो पहला word था ताम्रयचक्षुः, फिर कमलयुगलम. And I understand सब लोग संस्कृत पढ़ने के लिए used to नहीं है तो थोड़ा हो जाती है गड़बड़ when you're trying to do the tune as Saat. And this word was sfutam murtiryasya. Okay. चलो शिखा next. मूर्तिर्यस्य. Very good. Okay.
Okay, next. मैम ने अच्छा शुद्धाता हाँ, लीड आप करना अच्छा ये एक्चुअली अब करो, शिखा जी रहने दो। मिनी, आप अगर कार में हो फिर भी अगर ये दिख रहा है तो पढ़ सकोगे क्या? तो विल गो नेक्स्ट टू बिंदु। मैम एक मिनट में ट्राई करती हूँ। हाँ, इट्स ओके, धीरे धीरे पढ़ो, कोई बात नहीं। थर्ड वाला है क्या मैम? ये थर्ड नमन वाला पढ़ना है। हाँ, नमन्ना केन्द्राली मुकुट मणिभाजाल जटिलम लसपादा भोज्यमहिनिह यदीयं तनूमिता भवज्ज्वाला शान्तये प्रभवति जलं वा स्मृतिमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हाँ, बहुत बढ़िया। ओके, बिंदु नेक्स्ट। Are you reading, Bindu? Ma'am, I think I will just read. I don't know the tune. हाँ, don't worry. Just read whatever you can do, because this way we get used to reading a little bit Sanskrit, or this is something we can learn and use it every Diwali. इसके लिए मैं करवा रही हूँ. Okay, ma'am. यदच्चार्य भावेन प्रमोदितमान दुर्ग इह क्षणादासे स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभेत सद्भक्ता शिव सुख समाज कुमुदता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवेतु मे। Very good. Hemal, please change the page. Ma'am, can I read the next one? Yes. Okay. Kanachvarnabhasophyapagattanurgao navivoho vichitramapyeko nripati varasiddharthanayah ajnanmapi shrimana विगतप भवः रागोत्भुतगतिः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। in bracket नः। Very good. एक काम करना सब लोग, दिवाली के दिन, I think this should be on YouTube. You should be able to find out sung on YouTube. If somebody wants, you can send a link on the group. So play it and at least share it with your family. क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 8 ही स्टैंजास हैं. ओके ओके, अब नेक्स्ट कौन रह गया है? 3 more people. मेघा नहीं पढ़ेगी शायद. हितल, do you want to read? Yeah, okay. अनिवार्योद्रिक रित्र भुवन जीय काम सुत भट. I'm sorry, Kumara. Hetal ji, the next one is Yadiya. This अच्छा, one, sorry, I this will one. read. Yeah, I'm यदि sorry. यदि यावांगा ऐसे. हाँ, यदि यावांगा विविध नय कल्लो लमिवला लविमला ब्रुज ज्ञान नामो भीर्जगति जत जनतः या संपैति इदानिमेषा बुद्ध जन मरेला परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नमः. Very good. No. The only one word you didn't say properly was बुद्ध जन मरालई. आई की मात्रा है ना, मरालई, मरालई. Okay. So, and Okay. I want to appreciate Hetal. Just want to acknowledge, I'm glad you came today. I know you have your job, restrictions. You come from work late, or क्योंकि दिवाली का time है and you probably didn't work late today, but you made it a point to come to class. So I wanted to acknowledge your sincerity. Thank you, ma'am. And अब कौन रह गए हैं?
मेघा मुझे नहीं पता if you're allowed to ये पढ़ना allowed है कि नहीं आपको. अगर नहीं है तो it's fine, you're excused. तो फिर अब बचते हैं. I'm allowed to. As Oh, in if you're slowly allowed then. to, अगर आप try करते हो तो जरूर करो फिर. हाँ. Okay, ma'am, but not now. I don't अभी think I'm नहीं ना? allowed now, as of now. अभी नहीं ना? You said you're not allowed, right? Yes, ma'am. Okay, that's fine. No problem. Then you're excused. तो अभी शिखा जी आप पढ़ लो ये वाला next one. Okay, ma'am. अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवन जयी काम सुभटः कुमारावस्थायीमपि निज बलाद्येन विजितः स्फुरनित्या आनंद प्रश्मपद्राज्याय सहजिनः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. Okay, Hemal, I guess nobody else is left, right? I think, did one or two people drop out? I think so. Okay, so Hemal, you do the last one and then we'll do the other two. महामोहांतक प्रशम न पराकस्मिक भिषग न निरापेक्षो बंधुर्विदित महिमा मंगलकरः शरण्यः साधूना भवभयमृतामृतमुत्तमगुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. महावीराष्टकं स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना यह पठे शृणुयाच्चपि याति परमां गतिम. So ये पूरा हुआ. Now I was thinking we can stop sharing, Hemal. You know what we can do is, if you want to do, since that's the only Gandhar today, so you do your Gandhar and then we'll end with those two poems. ठीक है ना? Okay, let's go ahead. हेमल जी म्यूट है आप. It's okay, maybe she's taking out her notes. Yeah. Today, I'm going to do my Gandhar Mulyankan on Tattva Gnan Patmala 1, Chapter 2, Saat Tatva Sambandhi Bhool by Acharya Kalpa Pandit Todarmal ji. This chapter references Moksha Marga Prakashak, 7th Adhikar. Hemal ji, sorry to interrupt. Can I just, if you can go little slow, not too slow. I know it's difficult because I'm making notes also. Okay. Just thank you. Sure. Good idea. In this chapter, what we are focused on is that previously we learned about Saat Tattva Sambandhi Bhool, and in that we learned about the gross mistakes that we are making. In this chapter, the focus is more on the sukshma mistakes, the agrahit mithyatva we may have, that is that is not being caught easily by us, to prevent these mistakes from happening. So the focus is going to be on this. Excuse me. Now, Samyak Darshan occurs with Atmanubhuti after 7 Tattva Sambandhi Bhool or Viprit Manyata is gone. So this is the main reason why we have to focus on our bhool, because not to focus on it means we are never going to get to Samyak Darshan. Tattva Abhyas. So previously we learned that we can do Tattva Abhyas, but with Tattva Abhyas, your Grahit Mithyatva will be gone. And even with Tattva Abhyas, it is hard to get the true internal knowledge that we need, since we all hold extreme agrahit mithyatva inside of us.
And just to give a small example, I just realized this yesterday or day before. Our mind is constantly, whether we have an external reaction to things that happen to us or not, whether that external reaction is not there or there, our mind is constantly going through this. Ye acha hai, ye acha nahi hai. This I like, this I don't like. वो constantly चलते रहता है मन में तो. I'm watching a movie and मन में यही चल रहा है. अरे that guy didn't do something good. अरे that guy is doing something nice. अरे he doesn't know about. So the mind is constantly going on, and you don't even know that your mind is doing all this. And that is the part which is causing us to constantly bind karma. Even though I have done tatva abhyas with Prabhaji, we have learned what we have learned. ये तो चलते ही रहता है. इसको बदलने की जरूरत है कि ये काम करने की जरूरत है. मतलब we can do suppression, but it's only suppression. उसके बाद फिर से आ सकता है, यही आएगा. But for this reason, I feel that what Mahavir Bhagwan and all the other Tirthankars have achieved is just truly amazing. To be able to get to this unconscious mind that's constantly churning out these types of thoughts is what is the work we have to do. Now, the way I have approached this chapter is they have talked about the bhool. I'm talking about the reverse, which is how do you overcome this bhool? Because that's what we have to do. Now, to overcome the Jeev and Ajeev Tattva related bhool, there are a few different things that have been talked about. One is that we need to recognize that Bhed Vignan is very important. Bhed Vignan every moment of the time will take us to Samyak Darshan. Now, apart from Samyak Darshan, Vitrakta within us is a very important component of getting to be on moksha mark, straying on it and achieving the paryay of moksha. The next thing is that we need to not mix up swa and par, and the way we can do that is by knowing the lakshan of each. So gnan se wo ched karna hai ki this is swa and this is par. This is very hard to do. I mean, if you think about that mind that's constantly churning out these thoughts all the time. The next is we need to know that the right faith is that all kriya that we do is associated with par. None of it comes from swa. Swa is just being nata drashta. Par is doing everything else. Me talking is par right now. There is no swa right now. The fourth point over here for Jiva Jeev is having experience of your own Atma is the most important part of this. And having this experience and recognizing that there is no par in this. There is only swa. It's just that experience, hard to even describe right now. The last area to avoid these mistakes related to Jeev and Ajeev is not to mix the activities of swa and par. So निमित्त से swa and par की activities जुड़ जाती है, मगर हमको ज्ञान से उसको भी छेद करना है, उसको भी भेद करना है, उसका भी, तो जीव अजीव तत्व की भूल समाप्त हो सकती है. So this is all how to overcome Jiva Jeev related bhool. Now, for Asrav related bhool, there are certain areas we need to focus on. The first thing is that all types of Asrav is Bandh ka Karan. So and it is Heya. So if you are doing पाप का कार्य, we are saying हाँ इसने तो गलत किया है, इसको तो नरक में ही जाना है. But if somebody is doing something good, you say अरे कितना अच्छा है, कितनी अच्छी कार्य किए इसने. That time we are not thinking, in our minds that this is also heya. This activity is also heya. But relative to paap ki activity, it might be a little bit better. But in the path that we all want to go on, which is to reach the moksha paryay, it is heya even in that paryay. The next thing is that we have to know that there is no bandh
only in vitrag jnata drashta state. So सब states में बंद होएगा ही. Only when you reach this vitrag dasha, then there is no बंध. उसको हम बोलने के लिए बोल तो देते हैं, मगर अंदर से उसके लिए जो ट्रस्ट या फेथ होना चाहिए, वो होने से अपना आश्रव बंद होएगा, ऐसा जानना है. Know that internal nature of mithya also results in आश्रव. हम हमेशा बाहर का देखते हैं, बाहर का बोलते हैं, हाँ इससे तो पाप, इसने पाप किया, इसने पाप किया, इसने पुण्य किया, ऐसे बाहर देख के बोलते हैं, मगर अंदर क्या चल रहा है, that is very very important. और अंदर में क्या चलता है, what are the different things अंदर में होता है that causes ashrav that are very difficult to capture by us. One is that agrahit mithyatva is occurring, and that eliminating just grahit mithyatva is not enough. तो वो agrahit mithyatva हो रहा है, उसे पकड़ने की जरूरत है. The next thing is that we need to know that हिंसा का कारण प्रमाद है, प्रमाद परिणति, and इंद्रिय सेवन का कारण अभिलाषा है. So knowing कि प्रमाद परिणति और अभिलाषा हो रही है मुझे, and वो बंद होने पर ही you can prevent ashrav. So truly you need to work on these internal states. मगर ये सब states जाएगा when you are in vitrag dasha. तभी तो वितराग दशा की इतनी महानता है, कुछ सहज से ही ये सब जाएगा. बट अभी ज्ञान के लिए तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि मैं ये कर रही हूँ, कि मेरी ऐसी अभिलाषा है, वो मैं कर रही हूँ. लाइक यू नो, recognize that rag dvesh in abhipray is as bad as krodh ya man ya maya. It is as bad as that. So abhipray is the driver over here. The next thing that is important is that हमने हमारे आत्मा की शक्ति पहचानी नहीं है, क्योंकि वो आत्मा की शक्ति से ही सब योग बंद हो जाएंगे, मगर वहां पहुंचने की ये स्टेप्स है जो हम सीख रहे हैं in terms of the 7 tattva related bhool. The next tattva related bhool is the bandh tattva sambandhi bhool. In this, the most of what we talked about ashrav is also relevant over here, because ashrav ke saath bandh hota hai. It doesn't occur independently. And that we need to know that punya bandh ka karan is not, punya bandh is not moksha marga path, you know, and that is that we need to re-educate ourselves to recognize that कि मैं पुण्य बंद कर रही हूँ. ये बात करने से ही मेरा पुण्य बंद हो रहा है right now in class. और ये जानना है कि ये भी हेय है, क्योंकि पुण्य बंद से खाली भोग सामग्री मिलती है, भोग सामग्री से राग द्वेष बढ़ता है. तो ये उचित नहीं है. अगर मुझे मोक्ष पर्याय तक जाना है, अगर मुझे खाली भोग सामग्री ही प्राप्त करनी है, तो ये तो रास्ता सही है, पुण्य करो, भोग सामग्री करते रहो, राग द्वेष करते रहो, संसार में रहते रहो. बट अगर तुम्हारा गोल है कि मुझे तो मोक्ष पर्याय पहुंचना है, तो ये जानना जरूरी है कि दिस इज ऑल्सो हेय. नाउ द नेक्स्ट तत्व की भूल जो हो सकती है इस संवर तत्व भूल. इसमें जानना है, नो दैट अहिंसा एंड फॉलोइंग ऑल द व्रत्स इज नॉट संवर. हम सोचते हैं कि अगर मैंने 5 व्रत फॉलो किए तो मेरा सब कर्म आना रुक जाता है. कोई रुकता नहीं है, क्योंकि अंदर में अभिप्राय तो वही है, राग द्वेष तो है ही, तो उसमें कोई संवर नहीं होना है. सो इसके लिए व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सही क्या है इन टर्म्स ऑफ गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, परिचय एंड चारित्र. इनका ट्रूथ जानने की जरूरत है. व्हाट इज रियल इन when you are doing these things. क्योंकि हम लोग सब उठ के बोले, अरे हाँ भावना बत्ती सी उठ के मैंने कर ली, मेरा सामायिक पाठ हो गया, मेरा संवर हो रहा है. कोई संवर नहीं हो रहा है. बहुत जरूरी जानना है कि ये चीजें क्या है. So first is and also all these are more relevant. आपने दीक्षा ले ली और मुनि हो गए,
तब हम लोग को तो इतना ये रेलेवेंट नहीं हो सकता है, उनके मुनि के हिसाब से ही लिखा है। गुप्ती में गुप्ती इज वीतराग भाव which results in वचन काया की स्थिरता। सो गुप्ती होता है तो अंदर से जो स्थिरता आती है, आत्मा की शक्ति से जो आते हैं, दैट इज रियल गुप्ती। ये जानना जरूरी है, बिकॉज नॉट नोइंग that is real gupti, you will say, hey, I am following gupti right now, that means मेरा संवर हो रहा है। कुछ नहीं होएगा, उसमें भी बंद हो रहा है आपका, सबका, जिनका भी। Second one, what is samiti? Samiti is being watchful, mindful in walking, talking, getting food, in taking, keeping and disposing things. In this, the main focus is sahajta. Sahajta जरूरी है। जब सहजता नहीं होती तो इट इज इंडिकेटिव कि तुमको आ सकती है, यू नो। पेपर हियर इट इज, सॉरी। और वो भी पुण्य का बंद हो ही रहा है। अगर जीव को आया, अरे इस बर्ड को मैं बचा लूं, तो दैट इज पुण्य बंद राइट देयर। देयर इज नो समवर हैपनिंग, तुमने कोई कर्म रोका नहीं है। नेक्स्ट इज द मेन, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस आई फील इज the work I could actually try to do, but remember, I am not Samyak Darshan person, so this is just work, you know, for me. उन लोग को तो सहज साथे होता है, but refrain from giving ishta anishta connotations to padartha, and this will result in no krodh. तो इतना तो हम कर सकते हैं, भले वितराग भाव से नहीं, आत्मशक्ति से नहीं, मगर अपने मन से इष्ट अनिष्ट नहीं। You know, Prabhaji is always telling us this. It's okay, let it go, you know. Oh, it's okay, let it go. क्रोध तो नहीं करो, because that is a step worse than this particular place. But the best place would be the place who are having samyak drishti are, you know, with all their other things that they do. An important thing for us in our, this is one of the steps we are on right now to get to samyak drishti. So हमको सीखना है कि वस्तु का सही स्वरूप क्या है, and then पहचानना भी है उसे कि कोई भला बुरा है नहीं, जो है। ये हमको पहले सीखना है, फिर हम जानेंगे उसको। That is on our path, so we can definitely do this much right now also, वस्तु का सही स्वरूप जानना। The next is to stay nata drashta without sukh and dukh from ishta anishta is the true परिचय। तो हमने सोचा, अरे मैंने 4 घंटा भूख लगी थी फिर भी नहीं खाया, और फिर सोच लिया कि यही परिचय है, तो कोई परिचय नहीं हो रहा है वहां पे। जानो कि वो परिचय नहीं है जो मैं कर रही हूँ, and that I think at least in your own self you know that this is not the real thing, so that then you can say, I don't know, I'm not doing the real thing, let me do the real thing. It will get you to that. The main problem with some of these things I feel is that हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, हमको सब मालूम है, तो हमको अलग करने का मोटिवेशन ही नहीं होता है। मगर हम कर रहे हैं और बोलो कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो सही नहीं है, तो फिर आएगा अंदर से कि अरे सही क्या है, मुझे जानना है। Then you can actually get on the path. Varna you are just fooling yourself, thinking you are following and doing all this dharma when actually you are not even close to understanding what it is. तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए some of these points are, I feel, are very important. The last thing is adasin bhav is true charitra. In Abhipray, know that mantra, roop, mahavrat adi are not moksha marga. So the true udasin bhav of indifference will come from within, क्योंकि हमको अंदर आत्मा का इतना सुख है कि हमको बाहर, और हमने ये स्व पर भेद कर लिया है, तो वो बाहर में जाता ही नहीं है। That is true udasin, not that
anything else that you may do. अरे मैंने गुस्सा कर्ब कर लिया, आज गुस्सा नहीं किया. This is a good thing. It's not, it doesn't work that way. Just know that, you know. तो फिर तुम सही रास्ते को ढूंढ सकते हो और जा सकते हो. The next tattva bhool that we do is nirjara related bhool. And 1 second again, my thing is shifting. Refrain from thinking that Bahya Kriya is nirjara. हमने आज महावीर अष्टक स्तोत्र पढ़ लिया. हमने सोचा कि महावीर अष्टक स्तोत्र पढ़ने से हमारी निर्जरा हो रही है, तो ये गलत है. There is no nirjara in that. That is not true nirjara. True nirjara is after you are vitra. हम अंदर गए हैं और संवर के साथ निर्जरा हो रही है. That would be true nirjara. Know that only Shuddha Bhav causes nirjara. So that's the other part of it. Now so the last tattva is moksha. उसके related भी भूल है हमारी. हम अगर भूल में ही रहेंगे तो वहां पहुंचेंगे ही नहीं. So as Prabhaji has told us, you want to go to Delhi, but you catch the train to Ahmedabad. You are never getting to Delhi. You are going to end up in Ahmedabad. तो इसमें मोक्ष related भूल में कहा है, very important. This is so सूक्ष्म this बात, you know, कि मोक्ष का सुख is not dependent on indriya. And the happiness that we are experiencing with our indriyas right now in this world is not the happiness we are going to feel when we are in moksha paryay. I don't know what that sukh will feel like because I am not there and I haven't done it. It's been described by Jinwani of what it will be, but we have to get this very clear that ye dono sukh, nothing like each other. जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि ये इंद्रिय सुख जो मिल रहा है मोक्ष सुख ऐसा ही होगा, इंद्रिय सुख को छोड़ेंगे ही नहीं, उसको ही पकड़ के बैठेंगे क्योंकि इसमें तो सुख मिल रहा है मोक्ष जैसा, तो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है. But we have to know it is not dependent on indriya and it is different from the sukh we get with indriya. And the last thing that I want to say today is only Shuddha Bhav is the karan for moksha. Shuddha Bhav, that's it, nothing else. So hum Shubha Shubh Bhav karenge, it is all going to determine your gati. There is nothing else to it. And with that, I'll end my chapter on Saat Tattva Sambandhi Bhool. I know I have more to learn about this because every day you read this, you understand some other aspect of it. So, Jai Jinendra, Excellent thank job, you. Hemal. Excellent job. Bahut acha. And you looks like you have written or typed notes also. Yes. So that's good. So at any point, like I know Shikha is trying to take notes when you're speaking, you can always go back to YouTube if you missed writing something and write. I think she did a very good job of explaining the Saat Tattva Bhool. So I know you were trying to analyze Mahavir Ashtak Stotra. So let's see now what happened. हमने जब महावीर अष्टक स्तोत्र बोला तो जीव ने क्या किया उसमें? जीव ने सिर्फ भाव किया कि मैं महावीर स्वामी की स्तुति करूं. बाकी क्या हुआ? हमने वर्ड्स जैसे हमें लगता है कि हमने बोला, राइट? पर हुआ क्या? भाषा वर्गणा ने अपने आप अपना काम किया, है ना? भाषा वर्गणा इज ऑल्सो पुद्गल, लाइक अ डस्ट पार्टिकल. वो पुद्गल के निकले अपने, उनके जो गुच्छे हुए शब्द बने, वाणी निकली. So if we start analyzing like that, then it is helpful in Bhed Vignan. So in detail, we start thinking what all is happening. You know, sometimes you think कि मैंने तो भाव ही नहीं किया था, फिर भी that happened. And that is true. तो पुद्गल की भी अपनी शक्ति होती है क्रियावती. It has its own way of doing things too, right? Sometimes we don't know, suddenly some article just falls. उसमें मैं तो नहीं थी, हवा होगी, कुछ भी नहीं होगा, उसकी अपनी भी तो होती है ना क्रियावती शक्ति. So जब हम उसको एनालाइज करेंगे कि देखो ये कार्य हुआ, मेरा योगदान इसमें सिर्फ इतना हो सकता है कि मैं भाव कर सकती हूँ. That is it. I cannot make it do it. I cannot do it. It is happening because of its own doing.
I just was present there. So हमने महावीराष्टक बोला, वो कार्य किसमें हुआ? शब्दों में, उस भाषा वर्गणा में, उस पुद्गल में। तो जिसमें कार्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उपादान कारण। वो हमारे इस कोर्स में निमित्त और उपादान आएगा, तो we will go more into details. I just did the bhav and I was just present as a nimitt as the Mahavirashtak Stotra was being spoken. ठीक है? So हम ऐसे ही अपने दिन भर के जो कार्य चल रहे हैं, सपोज आप कुक कर रहे हो, आप जॉब पे हो, पढ़ रहे हो, सेम थिंग, कि मुझे तो सिर्फ भाव आया कि कुकिंग होनी है. Just yesterday in some swadhyaya I was giving this example. It's even in our daily thinking, हमें अगर चाहें तो we can change the way we speak, think, speak verbally. तो हमें व्यवहार की तरह बोलना पड़ेगा. Like I was telling my mom in India, नागपुर में उनके पास में काफी सारे maid servants हैं. So one of them who cooks, वो जब वो पूछती है मम्मी से, जैसे नॉर्मली क्या बोलते हैं, क्या खाना बनाऊं जी, महाराजा से पूछेगा आज क्या खाना, तो वो कैसे पूछती है? मम्मी क्या बनेगा आज? I don't know if she means that way, but I love it when she speaks it. क्यों? वो अपने ऊपर कर्ता भाव नहीं लेती है. वो क्या पूछती है? क्या बनेगा आज? जो खाना पुद्गल है वो उसका परिणमन होगा अपने आप, उसमें अपने आप बन जाएगा. राइट? वो ही उस बात को पूछ सकती थी क्योंकि उसकी ड्यूटी है उस खाना बनाना. वो पूछ सकती थी मैं क्या बनाऊं आज? मैं क्या बनाऊं आज इज द कर्ता भाव. और क्या बनेगा आज? क्योंकि whether I want it or not, I can wish for बाजरी की रोटी, but turns out रोटी गेहूं की रोटी. तो अगर मेरी सब जगह चलती तो सब मेरे तरह से, मेरे भाव के हिसाब से होना चाहिए. But doesn't happen. I can make the भाव कि आज मुझे ये खाना है. खाना वही मिलेगा जो उस पुद्गल का, जिस पुद्गल का परिणमन होगा. ठीक है? So this is further thinking of भेद विज्ञान. So चलो अब हम who had said, I think she left, right? Shikha was going to do the, no, Shikha is there. Yeah, You said okay. you knew वो ना शुद्धातम. हाँ, I can do. हाँ, आप वो Prabhaji, करो. और I am doing हाँ. Gandhar Mulyankan today. Don't I get 3 Okay, questions? fine. Yes. Okay, so I Sorry. will, I mean, okay, ठीक है. तो चलो अभी जैसे मैंने इसका विश्लेषण आपको बताया, तो अब आप कोई एक टास्क लो जो आप रूटीनली करते हो, and you try to do the भेद विज्ञान. And two of the questions will be, one, you will do भेद विज्ञान between Jiva Jeev, and the other one I want you to do भेद विज्ञान between Ashra and someone, that those two. So there will be 2 different questions. So what is my current question, Prabhaji? It's the same question, 2 questions within one question. One is, try to apply भेद विज्ञान between Jeev and Ajeev in one of your day-to-day life happenings, and do the same thing for Ashra and Sambandhi. An example would be mostly I do cooking, but you've already given the example of cooking. Don't worry, you can repeat. It's okay. Repetition is Oh. fine because it's your own now. Now you are doing the भेद विज्ञान. Right. मेरे घर में जब भी खाना बनता है तो मैं खाना बनाती हूँ. That would be combining जीव and अजीव तत्व. Because जीव तत्व का तो भाव है कि खाना बना देना है, मगर अजीव तत्व को जीव के साथ जुड़ा दिया और बोल दिए कि मुझे आज खाना बनाना है. So that would be an example of mixing up ajiv and jeev tattva. The next question, what No, is take it a little further. So now think about something you're cooking today, yesterday, whatever. Just take one thing
and then analyze what actually is going on. Okay. जब भी सब्जी काटती हूँ हाँ. तो सब्जी काटना स्वयं हो रहा है पुद्गल के निमित्त से, और मेरा जीव उसमें कुछ नहीं करता है. It is just the actions of Pudgal that are happening independently. There is no. The actions are happening independently. मेरा भाव अलग से हो रहा है, भाव अलग से. मेरे हाथ उसमें निमित्त बन रहे हैं चॉपिंग में. निमित्त बन रहे हैं करने में. Yes. Because they are there, right? They are Yes. doing something, but yes. they cannot make. If I could make that sabji cut, I Yes. could wish they were exactly cut the same weight, same size, but I cannot do it. Right. It's not possible. Why? Because उस सब्जी का जिस रूप परिणमन होना था वो वैसे ही independently होगा. So that is how every time कट रही है. Right. So every time we do a task, we want to get out of this karta bhav. Yes. And the way we do is we analyze it, that how it is independently happening. Yes. I'm just present there and Yes. my bhav. Yes. This happened to me last year when I went into the swimming pool. It suddenly came to me. I just had this thing that I have to swim, but then the hands are moving of their own because of their parinaman in themselves for the swimming. And that was another example that came to me. It occurred to me last year that this is not me. This that is moving is not me. This hand that's moving is just the karmic independent activity that's happening. मैंने तो बस भाव किया कि स्विमिंग करना है. और देखो कई बार हम प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं, बिकॉज कई बार मुझे पता ही नहीं था कि मैं तो लाइक साइकिल जो चलाते हैं हम सीखते हैं, राइट? हम रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं, बट वन फाइन डे somebody leaves the hand and we are going. Why? उस दिन उस साइकिल का परिणाम वैसा होना था कि उसका परिणाम वही होना था. Yes. So independently when you think, oh, मैंने तो आज सोचा भी नहीं था मैं ये कर पाऊंगी, पर हो गया. Correct. So okay, ठीक है. अब आश्रव और उसका बताओ. So in the second question, is it the comparison between? No, let's say I'll change the question. You give me a couple of example of your Ashrav Tattva Sambandhi bhool. Oh, my Ashrav Tattva Sambandhi bhool. Okay. I think my biggest one is कि मैंने गुस्सा नहीं किया तो मेरा आश्रव नहीं होगा. That has been my biggest mistake, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि अभिप्राय is so important. And I think that has been my biggest mistake around Ashrav that I have realized or learned just from knowing this. That doesn't mean that I'm able to change my abhipray. I cannot. I'm a ragi jeev, so होएगा नहीं, मगर फिर भी it is better कि मंद कषाय रहने का versus क्रोध, the external expressions of and Swadhyay is what is going to change our abhipray. Because जैसे जैसे तत्व संबंधी भूल जाएगी, जैसे तैसे हमारी निर्णय पक्का होगा, वैसे वैसे. वो निर्णय पक्का नहीं हुआ है अभी तक, वो निर्णय पक्का करने का है. is where I would say I'm stuck practically. Right. So now third question कि मोक्ष जितना अभी तक हमने पढ़ा है, according to that, why do you want to go to moksha? I think the main reason for me is, throughout, since from the time that I would say I have become older and more understanding, every time I would have an experience like if मेरे को कुछ अच्छा होता तो मेरे को happiness होता, but very short-lived. After that, it was like, this doesn't give me happiness anymore. It's not continuous. It's very momentary, momentary, that you get from things that you accomplish or things that you get.
the recognition you may get. Like they say at my work, oh, you did such a fantastic job leading this project. उसके बाद तो वो खत्म हो गया. वो maintain happiness from that maintain करने के लिए कितने सारे projects continuously करना है. तभी वो उसका सुख continue, and the effort of doing so many projects continuously, day in, day out for 30 years, it's not easy, Or at some point, there is always going to be somebody else who's younger with more energy who's going to do better, at the same things, So, एक तो मैंने सुख का ऐसे अनुभव कर लिया कि ये जो संसारिक सुख में मैंने ये देखा. सेकंड थिंग, दुख के बारे में मैंने देखा कि दुख कोई वस्तु जाने से बहुत दुख हुआ है. और वो दुख को मिटाने के लिए मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज की. I went and traveled to different places. I would talk to my mom. I would talk to my grandmom. फिर एक दिन grandmom passed away. तो दुख और भी हो गया. अभी किससे बात करने का, दुख कम करने के लिए. So then I realized that इसमें भी दुख का जो solution है वो मेरा वो सही नहीं है. वरना इतना जब मैं बाहर गांव जाती थी दुख कम करने के लिए, जब घर में वापस आती थी तो वो दुख तो वही है, वो कहीं नहीं गया है. So then I realized even this solution is not the right solution actually for me. Both are the wrong solutions. But I would keep thinking about these things. So what is the right solution? What is the right solution? And then I don't know how, luck by chance, I attended this Paryushan, and then I listened and I said, you know what? This is the right solution for me, because this is not dependent on my grandmom, my mom. It is not dependent on me traveling to anywhere. And it is activity that I will do, which will give me my own happiness. So it is, even the happiness is not dependent on other people. तो इसकी वजह से मुझे ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. And we will read this. I mean, we probably already did once, and we will again read this. The comparison between Indriya Sukh and Moksha Sukh. Kyunki what you described is ki how Indriya Sukh is incomplete, it's dependent, it's all those problems with Indriya Sukh. And that is the reason to find the Moksha Sukh. Yeah. Because Moksha Sukh doesn't have those limitations. Right. It's unlimited, it's forever, badha rahit. We will read all those different things that are part of. So very good. Okay, so we are done with your Gandhar Mulyankan also, and we'll finish with this prayer. वो सम्यक दर्शन वाला वो एक बार नहीं, sorry, आप कर रहे हो शिखा जी पहले शुद्धात्म वाला. हाँ. Okay. And will I do Samyak Darshan one after that? Yes, but try to do it quickly. We want to wrap it up in the next 5 minutes. शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है, सत शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, स्व पर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान धरेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे, सब सुख दाता मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम. Thank you. Good. And I want you to, how old is your baby now? She's 2. 2. She's ready to learn, memorize this, let me tell you. My son memorized the whole Logasa Sutra when he was 2. Oh my God. There would be nothing new if your daughter did it. She is very right. We teach our kids twinkle, twinkle, little star. वो नहीं करना चाहिए, हमें ऐसी They बातें are learning and memorizing and saying it, they would be able to do this. ये तुम रोज घर में गाना शुरू करो, she'll pick it up. हाँ. Okay. Sure. Okay?
And I'm telling you from my own experience, my own son learned Logos Sutra when he was not even 2 yet. Oh, And recently on WhatsApp, somebody shared, किसी 2.5 साल के बच्चे ने 1 से 14, Oh, right? yeah. Yes. It was amazing. Somebody posted it on the group. I saw Somebody- it. I Shikha ji, you posted did. it. It was Yeah. amazing. Very impressive. Yeah. So this is to motivate you guys with the little children, that your kids have lot of capacity. Yes. So आप अपने बच्चों के को सिखाओ, that will be your own learning also. And while they are younger, they have a lot of capacity to memorize. So this is the time to memorize, let them memorize things. Absolutely. Okay. So Hemal ji, you go next. Okay. Okay. Is this the one Bhagwan banenge? हाँ, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे वो, right. प्रभा जी, उसका आप मुझे ट्यून सुना दो ना, प्रभा जी, 1 मिनट ट्यून. It would be similar to this. कोई बात नहीं, ये शुद्धातम, शुद्धातम right? वाली ट्यून में करो. Okay. हाँ. सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे, स्व पर भेद विज्ञान करेंगे, निज आनंद का पान करेंगे, पंच प्रभु का ध्यान धरेंगे, गुरुजन का सम्मान करेंगे, जिन वाणी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना छना जल काम न लेंगे, निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे, मोह भाव का नाश करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे. Very good, very good. So these are very good simple poems that अपने बच्चों को तो सिखानी है, पर हमको खुद को भी, because it has a lot of murm in them, right? We should ourselves also, if we cannot memorize, at least read them once in a while. ठीक है? तो चलो आज हम यहीं finish करेंगे. So we had a good Diwali celebration today, the class. So फिर हम next time. Hemal ji, can you post this poem in the social group PH? Okay, thank you. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. जय जिनेंद्र. And Hemal ji, if you are able to do the titles of these recordings, so you can put Diwali special on this title for this today's. Okay. Thank you. Will do. Jai Jineendra. Jai Jai. Jai Jinesh.